Happy retirement day. I wish you happy life. Now you will get more time to chat with me. मिसिकी खेलिबा बुली जिबा फोन रे कथा हबा और खेलिबा. I love you. Dear Savita, enjoy the fruits of your hard labor. Yes, to wishing you a relaxing and wonderful retirement. Mama, wishing you a happy retirement from work day. I wish a relaxing, peaceful, healthy and happy days ahead for you. You are an awesome teacher who not only taught us the lessons from books but also the lessons of life. You taught us how to spread love, kindness and compassion for all around us. You taught us the lessons how to be positive when negativity surrounds us. You are an awesome teacher and you inspired us in many ways. We all proud of you, Mama. We love you. Hello Mama, congratulations on your retirement. Your long 40 years of teaching and your advice never be forgotten. You are the best example of strength, love, dedication and honest. Thank you for the best advisor for us in every stage of our life. Thank you for being an awesome mother too. Your teaching style and your charming personality must have a special place in their heart of your student and your colleagues too. Don't be sad on your retirement, Mama. Do the things you like. Keep on exploring and stay happy and healthy. Thank you, Mama. Thank you for everything. Take care. Bye bye. Hi Mama, I wish you a very happy retirement. I am really proud as your son as you have managed your entire life really well, both professionally as well as personally. And I would like to thank Baba for helping you out in your entire journey, which made it seamless for you and your colleagues as well as the students that you interacted. Now I will say you should sit back and see your achievements till date and enjoy your post-retirement life with full of enthusiasm and energy. And I will be there with you in your entire journey and hope we all will have a good time. Happy retirement again, Mama. Love you. ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ଜୀବନର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ତୁମର ଅବସର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଅବସରରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है।
ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन्यवाद। Happy retirement day, Opa. You are a role model for all of us. ଯେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଅପା. Again, I wish you a happy retirement life. Thank you. नमस्कार मामा एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट. सो आज रिटायरमेंट दिवस रे मु आपनको दुईटा जिनस कहवाक चाहिए. गोटे हूँ दीर्घ 30-40 वर्ष भितर आपण खाली निज पिला ही पढ़ाई ताहा नुह, स्कूल पिला भी पढ़े कि मनीष कर. सो दैट्स ए ग्रेट सर्विस टू द नेशन. द्वितीय कथा है एति दिन भितर आपण निज भी निजर स्वार्थ केबे भी भावी ना, सब बेले अन्य मानकर सेवारे ही निजको व्यस्त रखिछंती. सो मु चाहिए कि आपन रिमेनिंग लाइफ रे आपण निजको भी टिके टाइम दियंतु और लाइफ को टिके एंजॉय करंतु. सो विथ दिस आई एम वंस अगेन कंग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर रिटायरमेंट and stay safe and take care of your health. Happy retirement day, Appa. Wish you all the best. You have successfully completed your service period. Now it is time to enjoy more and more with your family. Again, wish you a very happy, healthy and prosperous life ahead. Wish you all the best. Happy superannuation Jathani ji. Happy superannuation Jathani ji. Today on 31st May 2021 you are getting superannuation from your post. Today on 31st May 2021 you are getting superannuation from your post. I wish you a happy superannuation filled with fun and happiness. I wish you a happy superannuation filled with fun and happiness. I feel to recite a small poem on the eve of your superannuation. I hope it will encourage you. I feel to recite a small poem on the eve of your superannuation. Hope it will encourage you. Happy superannuation Jathani ji. You fulfilled all professional ambitions. Now time has come to achieve personal aspirations. You filled all professional ambitions. Now time has come to achieve personal aspirations. Retirement is not the end of road, but beginning of open highway. Retirement is not the end of road, but beginning of open highway. It is the start of life's golden phase. Give your childhood dreams one final chase. It is the start of life's golden phase. Give your childhood dreams one final chase. Enjoy sunrise and sunset. Spend time with family and friends. Enjoy sunrises and sunsets. Spend time with family and friends. You did everything you could to help students shine, and no one has ever seen you whine. You did everything you could to help students shine, and no one has ever seen you whine. I wish you good luck in future endeavors. Let Jagannath fill you with health and happiness. I wish you good luck in future endeavors. Let Jagannath fill you with health and happiness. Thanks, dear Appa. Thanks, dear Appa. Namaskar. Mama, namaskar. Mama, you are the perfect example for all the women out there who doubts or thinks like it's difficult to manage personal and professional life. You have done so nicely by raising 3 wonderful children along with 2 set of families, and you have given all the love, support and care they needed. And you have given back to the society in the best possible way by being an awesome teacher for 40 long years. That's quite an achievement to be proud of. All I want to say is like keep spreading the positivity and smile as you always do, and read a lot of books as you always love to do so. Wish you a very happy retirement, Mama. Love you. Mama, namaskar. So finally the day has arrived. Now you are getting retired from all your official duties and responsibilities, and soon you will be moving to your second innings of your life, which is going to be much more interesting. So now you can try to work on your hobbies or any other interest, and you can focus on your health as well. So wishing you all the best. Thank you. Papa Pranam.
दीर्घ 33 वर्षर कर्ममय जीवन विरति नहीं अशेष अशेष धन्यवाद। बाकी जीवन सुख या समृद्धि एवं बंधु बांधव सब परिवार सह सुखरे रुहतु। आप जीवन में अनेक किसी पिला मनुष्य करेंगे जो मैंने कि दीर्घ दिन पर्यंत आप मन रखिए जहाँ आपंकर कर्ममय जीवन शेष होता विरति पर आप कुटुंब सब बंधु बांधव साथ भले रुहतु सब जमी हस खुशी रुहतु जमी हसुना। नमस्कार। Namaskar Bada Mama, wish you a happy retirement day. Your positive approach towards every situation and handling all the problems. Thanks for being my inspiration since my childhood, and I love these qualities of yours. You are my favorite and I love calling me my favorite little. Love you Bada Mama. Thank you. Bada Namaskar. After serving the nation, the society throughout this long time, it's time to start the new innings. Being in this extremely noble profession, you have left your footprints in each sector, each corner of the society. All your sacrifices, dedication and devotion to duty towards everything, be it teaching, towards pandemic or towards the family, cannot be described in these few words. Now your 100% time is ours. We are your little kids, developing through your guidance, love. Happy retirement, Bada Mama. Namaste, congratulations, celebrations, retirement life, enjoy. प्रणाम। दीर्घ कर्म में जीवन अवसर नहीं बहुत बहुत अभिनंदन। मु भगवान पाखे ये प्रार्थना करी तो जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो एवं सब देह सुस्थ रो प्रार्थना कर। बड़ मामा नमस्कार। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। मु आपण को रिटायरमेंट उपलक्षे किछि लिखिछि जोटा मु अबे पढ़िया पे जाउछि। होप यू लाइक इट। कल का सवेरा कुछ अलग ही होगा, सब होगा बस वो आंगन ना होगा। ना होगी वो घंटी की आवाज, ना होगा वो बच्चों का रौनक, ना होगी वो चौक की खुशबू, ना होगा वो दीदी की बोली, ना होगी वो कुर्सी, ना होगा वो कक्षा। कल का सवेरा कुछ अलग ही होगा, सब होगा बस वो आंगन ना होगा। जिसको दिया जिंदगी के 60 साल, जिसको दिया जिंदगी के 60 साल, उसको छोड़ना इतना आसान ना होगा। जिसकी वजह से मिला हमको एक नई राह, जिसकी वजह से मिला हमको एक नई राह, उसको भूलना इतना आसान ना होगा। जिसने दिया जिंदगी को एक नई मंजिल, जिसने दिया जिंदगी को एक नई मंजिल, उसको विदाई इतना आसान ना होगा। कल का सवेरा कुछ अलग ही होगा, सब होगा बस वो आंगन ना होगा। But Mama, enjoy your retirement. Now fun begins. All the best. Just sit, relax, be healthy, fit and fine. Enjoy your time with your grandkids. This is not the end. It's just the beginning of a new chapter. Sabita, wish you a happy retirement life. God bless you. सबिता हैप्पी रिटायरमेंट। मोर आशीर्वाद सबुबेले थाउ, सबुबेले सांसारिक जीवन सुखरे रहू। आशीर्वाद तुम पर हस खुशी रहो। प्रणाम। Congratulations on your retirement day, and I wish God for your upcoming life will be always fulfilled with happiness, joy
and also good health. And I again wish you a happy retirement day for mommy. Thank you. ସବିତା କର୍ମକାଳୀନ ଅବସରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। I'm so proud to be a part of a family where we have a lot of teachers in our family. And when it comes to a retirement, I just wanted to say that retirement is a stage of your life when you wonder how you ever found time to work so hard throughout your entire life. So I'm wishing you a very happy retirement life ahead. Please take care. माई नमस्कार, केमिति अछंती? आशा करुछि निश्चय बहुत भलसे अछंती। आउ रिटायरमेंट होउछि गोटे बेस्ट टीचर आउ जने बहुत भल मनीष। आउ कौन कहबी छोट बेलठू आज जाए किछि भी कहबी जदि सेटा कम हबो, कहीं ना छोट बेलठू नहीं कि आज जाए माईंकर को भी कथा कि को भी ये बहुत माने केबे खराब तो लागिनी आ बहुत ही भल ही लागिछि सब बेले। आउ बहुत एफेक्शनेट, बहुत त्यागी, एते बड़ फैमिली रे माने एते बड़ फैमिली रे केमिति जिंस को हैंडल करके आगो को बढ़िबा आउ ये करबा एते त्याग आउ ये जहाँ भी माने एते सिंप्लिसिटी त्याग आ गोटे भल मनीष कहबी वंडरफुल पर्सन सी होचंती माई। सेतिपई जहाँ भी कहबी कम हबो, किछि कहबी जहाँ भी कहबी कम हबो। आउ लव यू, खुशी रे रुहंतु सब बेले देह को जागृत करिकी सेतिकी ही कहबी। थैंक यू। Wishing you all the best in your new retired life. Stay happy and healthy. I wish for a happy life. Bada mummy. Ingu moro namaskar. Finally the day came. Wishing you a happy retirement life and wishing you a happy entry into your new chapter of your life. So enjoy this with full of energy and full of fun. And I hope it is filled with good health and relaxation. Have a wonderful retirement life. Keep rocking, keep smiling as always. Bless us and keep inspiring us. Thank you. दीदी नमस्कार, मु भारती। आपण मते निश्चय मन रखिथिबे मु आपण को पिलाटी दिन मोर आदर्श बोली भाबे एवं आपण होचंदी मोर प्रिय शिक्षयित्री। आपण को रिटायरमेंट डे रे मु केवल एति कहबा को चाहे आपण सब बेले खुशी रे रुहंतु, सुस्थ रुहंतु आउ एमिति हसुथांतु। दीदी मते आशीर्वाद करबा को जेमिति भूली जिवेनी, मते आशीर्वाद करंतु मु जेमिति अधिक रु अधिक उन्नति करे। धन्यवाद। Hello ma'am, namaste. I'm Itishri. Hope you remember me. Today I got a chance to tell something about you. That's really awesome for me and I'm feeling so blessed for that. As a teacher and as a person, you are amazing. And you are my all-time favorite teacher. That's why English became my favorite subject. So I heard that it's your retirement. So happy retirement and I wish you a good health and a good life ahead. Thank you so much and happy retirement ma'am. दीदी नमस्कार, केमिति अछंती? मु सुनली आपण टीचरशिप रे रिटायरमेंट नउछनी, सुनी बहुत दुख लागले दीदी। कारण आपण भली टीचर एक्चुअली समस्त दरकार सब स्टूडेंट को, बट एबे सेटा पॉसिबल हे परिबनी आपण रिटायरमेंट पर। आपणकर से पाठ पढ़ा मते बहुत मन पड़छ दीदी। आपण आमान बहुत गाइड करछंदी, बहुत बढ़िया पढ़ाइछंदी। May God's endless blessing be upon you today and always, Didi. Happy Teachers Retirement Day. Thank you. कविता मो तरफ तुमको हार्दिक अभिनंदन जनाची। तमें आज अवसर नेल, तुम मन किछिटा निश्चित दुख लगुव किंतु जीवन सहित मृत्यु जमती अच्छी, चाकरी सहित निजुक्ति जमी पाई अवसर बाध्य। से मन दुख कर कि ना, बाकी तक जीवन तुम सुखरे कटि जाऊ, तुम चाकरी जीवन सरजीव, तुम्हें नूतन परिवेश रे प्रवेश कर, अवसर जीवन सुखमय हो, काली बाबू सहित परिवार सहित
बाकी जीवन एकदम पुष्प वर्षा हो आउ यह मोर जगन्नाथ निकट में प्रार्थना। Congratulations, Appa. Wish you a happy retirement life. अप्पा नमस्कार। महाप्रभु जगन्नाथ दयारू आपणकर अवसरकालीन जीवन सुखमय और स्वास्थ्यपूर्ण हो यह ही भगवान ठारे प्रार्थना। जय जगन्नाथ। आप जो मो लाइफ में तीन इम्पोर्टाट डे से प्रथम है मोर स्कूल फर्स्ट जो दिन कि आप नाम सी से ना मुझे भी भूल पार और से ना सब चलने चेष्टा करें। सेकेंड दिन में क्लास बस एवं समस्त बसते से दिन आप गोटे शिक्षा देते जे केते भी शिक्षा अर्जन कले जब आम बेड अभ्यास करेंगे सिगरेट बेड हैबिट से शिक्षार किसी मूल्य ना मुझे से दिन ही डिसाइड कर केवल बेड अभ्यास करेंगे नहीं सी हूँ मोर सेकेंड इम्पोर्टाट। थर्ड हूँ मो लाइफ में सब योगदान कर जोटा कि नगद पाइल जो आप ग्रहण करते मो सफलता पाई मो लाइफ में सक्सेस और से सब यह कहना चाहिए आप सब खुशी था सुस्थ था और ये नीति शिक्षा समस्त दे था मत आशीर्वाद करूँ जमीक मो फ्यूचर आहरी अधिक उन्नति कर। धन्यवाद।